ये एक इन बिटवीन एपिसोड है वेर आई शाउट, वेर आई रैंट, वेर आई येल, रोर, साउंड ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन एंड आई एम ऑल ओवर द प्लेस. मेरा नाम है अदिति एंड ये मेरा पॉडकास्ट है काइपान अदिति, वेर आई टॉक ऑफ्टन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आई होप यू एन्जॉय टुडेज एपिसोड. सो द अदर डे, संडे था आई थिंक, आई बिलीव लास्ट वीकेंड की बात है. मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बिकॉज हे इट्स वीकेंड राइट. संडे को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मंडे को मेरे भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ट्यूसडे को फिर से क्रेविंग हुआ तो मैंने फिर से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. एंड सो अब हम 3 दिन से लगातार पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा मंगाए जा रहे हैं. क्यों? क्रेविंग, इतना भयानक क्रेविंग हो रहा है. एंड देन आई आस्क्ड माई सेल्फ, एम आई इमोशनल? I was for sure hormonal. I tell you this, like some days my hormones are so fucking all over the place. That's when we women like really need to forgive ourselves. यार हमारा बॉडी ऐसा बना है, हम क्या करें हम. It's literally fucking our body. Just the brain, this body fucks up your mental health, your emotional health, just everything. मतलब मैं बता रही हूँ तो शायद truly a man would never understand the feeling, but if you are a woman and if you've experienced and if you're listening, I feel like we understand this better, how fucked up hormones can fuck us up for good. So anyways, I feel good, I eat. I feel absolutely shit, I eat. And every time I binge eat. ऐसा हो रहा है मेरे साथ कुछ टाइम से. ऐसे हो रहा है कि द पोस्ट खा लेती हूँ, पर वो जो पोस्ट ईटिंग वाला जो फीलिंग आता है, अब खा तो लिया बट इट जस्ट स्टार्ट्स मेकिंग माई स्किन क्रॉल. लाइक आई वांट टू पिंच माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट. लाइक फक द हार्मोन्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिस हैपन्स ऑफ्टन अराउंड लाइक 10 या 12 दिन प्रायर टू गेटिंग माई पीरियड्स. PMS is so shitty real. But again, you gotta go easy on yourself. Really, like, forgive, forget, move on. Yeah. I think this also often happens to me with my hair. Like, when my hair is not clean, I want to take scissor and chop it off. सीधा clean slate बोलेंगे. Listen, when you have long hair, as long as I do, you have to maintain it. अपकीप होता है ना, ट्रिमिंग करना, हेयर वॉश करना, कंडीशनिंग करना, हेयर स्पा करना. लाइक देयर आर 15 to 20 डिफरेंट फलाना थिंग्स जो करना पड़ता है बालों को अच्छा टिप टॉप मेंटेन कंडीशन में रखने के लिए. एंड आई हैव दिस स्कैल्प एक्जिमा बोलेंगे. So my scalp is like very dry and flaky, and basically I can peel off the scrape. Yeah. So my dermatologist, of course, a rational person would go to a dermatologist. I did that. He told me to wash my hair every other day. He legit told me that. Imagine my horror. Imagine my jaw dropped. I was like, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? I was like, are you shitting me? I told him straight up, आपने जो बोला वो मैं सही सुन रही हूँ. यू वॉन्ट मी टू वॉश इट एवरी अदर डे? हैव यू सीन द लेंथ ऑफ माई हेयर? आर यू फॉर रियल? No, I said this. He was like, yeah, you have to wash it every other day, and this is the shampoo you should be using. So now I try to like keep my scalp less. The shampoo makes it less greasy, you could say. कम हुआ है एक्जिमा बट गया नहीं है. It's everyday struggle. Yeah. So now I'm losing my hair, washing it so often, and my mom is like, अब टकली हो जाएगी तो लड़का कैसे मिलेगा तुझे? Talk about first world problems here. Not a single person has come forward and talked me through how rosy their marriage is. किसी ने मेरे को रोज़ी पार्ट्स नहीं बताए हैं. सब लोग अपना स्ट्रगल, अपना हसल बताते हैं, बट आई अंडरस्टैंड देयर इज़ गुड, देयर इज़ बैड, देयर इज़ अगली, बट it just fucking sucks. Like, I can't do it, guys. Like, marriage makes me ick. Like, genuinely ick. The last guy my mom wanted me to talk to never ended up messaging me. मैसेज ही नहीं किया. ऐसा एक आए तो मैं तो खुश हो गई भाई. मैं खुश हो गई. आई वॉज लाइक, थैंक गॉड. आई कैन नॉट फक अप माई गुड एनर्जी. जब भी आप किसी से बात करते हो, आपका और उसका एनर्जी मिक्स होता है समवॉट. एंड सम पीपल, आप किससे बात करते हो, एंड समटाइम्स
it makes you feel sad or it makes you feel really happy and chumped and excited. So वो energy vampires होते हैं. Anyways, let's talk about थोड़ा सा energy. Something that I have noticed very recently is I have been in a pretty neutral state of mind, you know, when doing task chores or otherwise, कि I don't have a thought process कि अरे मेरे को कंटाल आ रहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है. Like I'm in neutral. Okay, I need to get this done. Okay, cool. Let's get this done with. No like good or bad feeling around it. So when I wake up in the morning, I meet my cook or I meet my brother, and they both come with their own set of baggages, own set of procrastination, their own set of mindset, mood. It sets a very heavy tone for my day personally. Like, I was like, okay, बट देम कॉन्स्टेंटली अफर्मिंग कि यार बहुत कंटाला आ रहा है, बहुत ही कंटाला आ रहा है, बहुत आई फील वेरी लेज़ी, मेरे को बहुत प्रोकेस्टिनेशन, आई एम प्रोकेस्टिनेटिंग एवरीथिंग, आई एम टायर्ड. रियली यू नो दीज वर्ड्स गेट टू मी, दे गेट टू मी रियली. लाइक दे रब मी ऑफ कि आप नेगेटिव है, आप न्यूट्रल में हो, आप किसी को ऐसे हाथ लगाओगे तो इट्स सॉर्ट ऑफ द एनर्जी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर्स फ्रॉम दैट पर्सन टू यू. मुझे ऐसा लगता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट शिट डन, सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग शिट डन विदाउट कंप्लेनिंग और विदाउट देम अफर्मिंग बैड वाइब्स आउट लाउड. बिकॉज करना तो है ही ना, तो बैड वाइब अफर्म करके तो काम तो और ये हो जाएगा, लूज हो जाएगा, क्या बोलेंगे, होगा ही नहीं. यू विल प्रोकेस्टिनेट मोर. यू नो यू नीड टू गेट इट डन, सो वाई अफर्म इट ना. यू कीप सेइंग यार आई एम लकी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सब अच्छा ही होना है, अच्छा ही होना है. और नहीं भी हुआ तो वो भी मेरे फेवर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरे फेवर में हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है. लाइक दैट it makes the task easier and quicker to get it through. That's the mindset. Okay, so it's not even, you know, the average of 5 people. It's surrounding yourself with even 1 or 2 people genuinely doing it and positively affirming some shit out loud that can get you going. So you know what is happening. Okay, I have to tell you this, नहीं मेरे को बताना ही है. So मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. ये बुक is about luck and our conscious and unconscious mindset about luck. Yeah. So when I was like in 3rd या 4th standard, थोड़ा सा बैक स्टोरी देती हूँ. मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी. मेरे पेरेंट्स हमेशा ऐसा ही बोलते थे, कोई भी ऐसा कहीं मेले वेले में गए, कोई फेयर में गए, मेरे पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि वहाँ पे कहीं कुछ लॉटरी रही या कुछ गेम वेम रहा जो लक बेस्ड है, जो भी है. दे वर लाइक हाँ लेट्स पुट, आपके भाई का नाम डालते हैं, मेरे भाई का नाम डालते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम एनी गेम एसोसिएटेड विथ लक, they thought कि मेरा भाई is the luckiest out of all of us. So they would always put his name in the draw because they had a very strong belief that he was very lucky. So now with consciously or subconsciously, I took it as okay, maybe he's the only lucky one in our family, not me. होगा यार, उसका लक होगा, पर उसके लक से मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट? सो while reading this book called Conscious Luck, the author basically कुछ 8 सीक्रेट बताता है to intentionally change my fortune, attract more abundance. His first secret, अच्छा मैं बुक पढ़ रही हूँ तो एक ही चैप्टर हुआ है मेरा, अभी मैं पढ़ रही हूँ. तो his first secret was about absolutely believing कि यार I am the luckiest person in the world, I am very lucky. He told me to sign a contract, and as a Taurian, I take contracts very seriously, especially if it brings me a lot of abundance, value, money, whatever. So I was like, let's entertain this idea for a second here. क्या ही हो रहा है, खराब तो हो नहीं रहा है कुछ. So he wrote down 2 lines of contract in this book, and he said to fill out my name. And then he said, ये contract आप कोई भी पेज पेंसिल लो, पेन लो, and एक पेपर पेन पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट 4 बार लिखो. सो 2 बार आप राइट हैंड से लिखो, 2 बार आप लेफ्ट हैंड से लिखो, तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड विल नोटिस दिस. आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. एंड देन ही सेड नाउ यू हैव मेड अ कमिटमेंट टू बीइंग लकी. ये आपका कमिटमेंट लेटर है, टेक अ लुक. इफ़ यू डोंट
understand it, take a look at it again, you've signed it, you've made a commitment to yourself to being lucky. I was like, okay, ये भी सही है, सही है. So there is more to the chapter, more, of course, you have to commit with joy, more contracts, he talks about getting back on track if you lose your way, etc, etc, such stuff. ठीक है. So now here's what happened following the next day. ये मैं रात को पढ़ रही थी बुक, ठीक है. I have so many examples which are so fucking bizarre कि आपको भी लगेगा अरे हो क्या रहा है. So the next following day, अब मैं जा रही हूँ, मंडे था, मेरा योगा क्लास होता है. सो आई गॉट डाउन 10:30, 11 बजे का क्लास होता है. आई गॉट डाउन 11 बजे का क्लास था, घर के पास ही है, ठीक है. टैक्सी लूँगी तो 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी. तो मैं निकली घर से. आई ईजिली गॉट द टैक्सी. मेरे को टैक्सी कभी मिलती नहीं है पहले तो, बट दिस टाइम अराउंड आई गॉट द टैक्सी. मैं गॉट डाउन, जैसी बिल्डिंग से बाहर निकली, सामने से टैक्सी जा रही है, एंड आई कॉल टैक्सी एंड देन टैक्सी हॉल्टेड. I went to my yoga class. I was like, okay, taxi mil gaya, that's great. Like, I was not paying too much attention, but then I had to consciously tell myself, see, you're so lucky. तेरे को इतने दिन से स्ट्रगल कर रही है, टैक्सी मिलता नहीं है. बॉम्बे में रह के भी ऐसा होता है because it's like school time, peak hour, everybody is busy, trying to get their shit done. But okay, so then I went to the yoga class, and somebody out of the blue, randomly out of the blue, said कि यार Aditi, you are my lucky charm. I was like, what the fuck? What are the fucking odds? What are the fucking odds? It's her word, not mine. I've not talked with her that day, and just we started. मैं शायद 11:10 को पहुँची होगी, तो योगा क्लास चालू हो चुका था. तो देयर वाज जस्ट एवरीबडी वाज वार्मिंग अप, एंड फिर जैसे ही मैं आई, आई स्टार्टेड वार्मिंग अप, एंड आई गॉट बिजी. एंड देन एज द सेशन वेंट ऑन, शी आउट ऑफ द ब्लू जस्ट सेज कि यार अरे you're my such lucky, आई डोंट नो कुछ क्या कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट शी सेड दिस. ऐसे मैं कल ही लक के बारे में पढ़ी हूँ और आप क्या बोल रहे हो. Now suddenly, as I'm going back, the traffic lights turning green, I'm like consciously in the state of, Aditi, you are the luckiest person in the world. You are very lucky. And so when I slip, I recommit to those words that I'm lucky, period. I haven't, finished the book yet, but I would highly, highly recommend everybody to check out the book. Highly recommend. Okay, here's something bizarre. So this just happened like 5 minutes ago. While I was writing the script. Okay. So थोड़ा सा एक बैक स्टोरी बताती हूँ. मैं योगा करती थी लास्ट ईयर, एंड आई लॉस्ट वेट. माई ट्रेनर वॉज रियली गुड. ओके, द क्लास दिस जो अभी मेरे बॉम्बे में जहाँ जाती हूँ योगा करने, द क्लास केटर्स टूवर्ड्स मिडिल एज वुमेन, एंड सो उनका जो 1 घंटे का जो एक्सरसाइजेज होते हैं, दे फील लाइक वार्म अप टू मी बिकॉज आई हैव हैड मोर इंटेंस वर्कआउट बिफोर, राइट. सो आई रीच्ड आउट टू अ जिम ट्रेनर. वही बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे योगा होता है, एंड 3rd फ्लोर पे जिम उन्होंने बनाया हुआ है, जिम का रूम, एंड सब इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेनर वगैरह है. सो आई रीच्ड आउट टू दिस जिम ट्रेनर. ही टोल्ड मी, अदिति, मतलब बहुत पोलाइटली बोला है वो, बट चुप गई उसकी बात, ऐसे दिल में हर्ट हुई. हाउ आर यू नॉट लूजिंग वेट? आर यू नॉट फॉलोइंग योर स्ट्रिक्ट डाइट? क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? लाइक सम हाउ आई वॉज द विक्टिम इन दिस कि भाई तेरे कारण नहीं हो रहा है, तू डाइट फॉलो नहीं कर रही, इतने 6-8 महीने से कर रही है तो भी तेरा वेट कम नहीं हो रहा है. आई इट ऑनेस्टली फेल्ट लाइक ही वॉज लुकिंग डाउन ऑन मी. इट्स हार्ड टू बी अ वुमन सम डेज, एंड टू find a trainer who is a woman who understands woman's body is very rare. So I came back home. I reached out to my last yoga instructor, जिसके कारण I lost 5 kilos. She's like properly 600 hours RYT certified female trainer. She's a yoga instructor. She's great, brilliant. Emphasis on the term female, because they are rare unicorn to find, and सही में वो बहुत अच्छा सिखाती है. So I asked her, would you be down for an online session? She said yes. Right away she responded on WhatsApp कि यार हाँ चल ठीक है. Now she has messed up in the past with committing and giving out dates but not being able to commit later on. ठीक है. So as the day goes on, I message her back again कि
इफ़ यू आर श्योर प्लीज़ तभी कमिट करना, वरना मत करना. डोंट, लेट्स नॉट मेस अराउंड, बिकॉज ये लास्ट 4 मंथ है 2023 के. I can completely flip the script for me. So she did not respond the whole day. Post my last message. I was like, shit, negative, negative thoughts धीरे धीरे seeping in. वो दीवार बनाई है और उसमें से पानी की जैसे से धीरे धीरे seep in हो रहे हैं. I kept on catching these negative thoughts. I kept on affirming, नहीं यार, चल, I'm the luckiest person in the world. Fuck it. Like, it's happening in my favor. If she says no, if she says yes, fuck it. Like, मेरे ही फेवर में हो रहा है, ना भी बोलेगी तो भी मेरे ही फेवर में हो रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ लिखा है. Something like that, right? So now, when I was writing the script, just as I, sat down, I was writing the script, she reached out. She told me she's down for it, and then she shared something funny. She said, Aditi, something very bizarre happened today. I was like, okay, bata. So yesterday she was like, she sat down and asked the universe, God, that, I want to start fresh again. I want my online classes back up again. So वो in person studio classes लेती है, but she also wants to do online classes, right? So she literally prayed and she let it go. What are the fucking odds? The next morning I reached out to her and I say, would you be down for an online session? That's so fucking bizarre. Like how the connection, the universe works in, seriously, like universe works in mysterious ways, and you just gotta trust. I know it's easier said than done, because there are days where I seriously question everything, but it's very hard to let go. I get it. Okay, anyways, so this book is called Conscious Luck by Gay Hendricks. He holds a PhD, and there are 2 authors. एक दूसरी है Carol Klein, which, BTW, I got this book from Amazon for 98 rupees back in May. So I heard about this book first on a podcast, and she recommended कि वो ये book पढ़ रही थी podcast वाली, and I was like, you know what, let me check it out because interesting लग रहा है. तो Amazon खोली, देखा, I was like, oh shit, 98 rupees में ही मिल रही है. Any book below 100 is mine. So देखा, फट करके बाय किया, आ गई बुक. एंड I don't know if I got lucky, because the current price of this book is 285. It's like a 175 page ka book. I don't know, man. I highly recommend you check out this book. Have an open mind, no harm done, basically. When I recommend books to my friend, they don't get it. And then the price shoots up, lol. Then that's where, they regret not getting it. कि यार हाँ, तू जब बोली थी तब ले लेना चाहिए था. Because जब मैंने उनको recommend किया था ये book, The Almanacs of Naval Ravikant, 150 रुपये की book थी. अब आप लेने जाओगे 300 रुपये के नीचे नहीं मिलनी है वो book. So this book is beautiful. Almanac of Naval Ravikant. Like, क्या मतलब, मेरी पूरी बुक हाईलाइटेड है पिंक में. If you can get it, just get it. Like, it's worth the money. Anyways, at the end of the day, if you are a non-believer, you don't believe in manifestation or luck, that you believe कि you have to really work very, very hard to get there. Fine, you do you. What I ask everyone is to just have an open mind to new ideas, new concepts. I mean, that's the whole point of reading in a nutshell, right? Key to expose yourself to the workings of new concepts and new ideas, right? Try not to close yourself off or judge too quickly. Yeah. Keep an open mind. It works great. If I don't vibe, I move on. I try to not hold grudge while reading. Yeah. What else, What else? What have y'all guys been up to? So I have been binge watching a lot of videos on YouTube. एक तो मैं तन्मय भटका देखती हूँ, या तो मैं दूसरा बुक्स के बारे में वीडियोस देखती हूँ. That is the level of obsession I have with books. Okay, anyways, I do yoga. I'm planning on chopping my hair into a bob. Like, I want clean hair style.
I I do not like layers, but I've gotten layers the last time I got a haircut done, and I just cannot upkeep it. I need low maintenance hair. I want straight, sophisticated, shiny, in length hair, bob, whatever, bob cut bhi nahi, but straight blunt cut, एंड मे बी कलर इट. बट देन आई थॉट कि यार एक्जिमा है एंड उसमें हर अगले दिन अगर बाल धोने पड़ रहे तो मेरा कलर भी चला जाएगा, तो कलर करके क्या पॉइंट है. एनीवेज, career wise, I don't really know where I'm going. I'm honestly applying to everything that is out there and letting the universe work its magic and pick something for me. So I'm just letting go career wise. मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं मेरा एफर्ट दे रही हूँ 100%. आपको जो देना है वो दे दो मेरे को. या now let's talk about love. Yeah. Yeah, we're getting there. Do you guys live in Mumbai? Like genuine, मेरा question ये है कि आप कैसे date करते हो? How does dating scene really work in Mumbai? And to understand this, I wanted to actually put myself out there and host these street interviews. Gen Y, Gen Z, ask about dating scene in Mumbai. Everything love based था वो. Love in the City करके मैं नाम देने वाली थी podcast को. Love and the City, like playing on the word Sex and the City, like, so I wanted to do Love and the City. Ask people about dating, red flag, green flag, best date night locations in Mumbai. I wanted to actually get out there and do this. Ask कि how does one find somebody, especially people who have not born and brought up in Mumbai, who have not studied in Mumbai, but they've come to Mumbai to work. How do they find people to date? I might have to honestly, take up a class just so that I could find people in that class to date. So much for education. But what I have realized is education bores me, honestly. The best MBA is starting your own business and learning on the go, and maybe having a mentor, of course. क्या नई सीखने मिलता है यूट्यूब पे. सूनर और लेटर एवरीथिंग विल टर्न डिजिटल, ये तो अपने को पता ही है. बट श्योर, एनीवेज, वी आर फार फ्रॉम इट. ट्रेडिशनल मीडिया और एवर कंपनी स्टिल नीड्स you to have a bachelor's, have a master's, have a MBA, or even relevant experience. So here we are. Anyways, throwing a lot at you guys. Sorry, I'm all over the place. Right, so dating. I want to date Mumbai. I'm putting this out there literally. So okay, I'm gonna stop for a second here. मेरा स्क्रिप्ट ऐसा था, ये जो मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ यूजुअली, आई हैव लाइक जनरल बुलेट पॉइंट्स एज टू वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. सो दिस इज़ वॉट आई रोट कि यार, आई वॉन्ट टू डेट मुंबई, पुटिंग दिस आउट देयर. डेटिंग एप्स हैव क्लियरली नॉट वर्कड आउट. सो there was this company called Date Hour. They have simple clean model. They set you up 2 hours speed dating, 20 guys, and just I think they charge a bit more than I anticipated, 4 to 6,000. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना आई फाइंड इट एक्सपेंसिव इनफ टू कंसिडर स्टार्टिंग माई ओन गो फंड मी पेज, जो क्राउड सोर्स पैसे जमा करो सो दैट आई कुड गेट आउट ऑन अ डेट, बिकॉज आई फेल्ट दैट एक्सपेंसिव. मैं अभी कमाती नहीं हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है. एनीवेज, जब भी जाती हूँ उनके वेबसाइट पे, दे आर ऑलवेज सोल्ड आउट. अगस्त का शो सोल्ड आउट हो गया था, मीटअप. सितंबर का वो लोग ऑनलाइन कर रहे थे, वो भी सोल्ड आउट हो गया था. एंड नाउ आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू डू. या अब हुआ ये कि ये सब मैंने अच्छे से, ये थॉट प्रोसेस जो भी है मैंने लिख लिया था. ये स्क्रिप्ट लाइक कल की बात है, कल शाम को लिख रही थी और आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड मैंने ये लिखा था यार, आई वॉन्ट टू डेट मुंबई, पुटिंग दिस आउट देयर. You won't believe, my mom reached out to me. My mom told me, so this guy is here, he's visiting Mumbai, and so you should meet him. I was like, shit, that's quick. That's so fucking quick. What are you telling me? What are the fucking odds? I forgot that I wrote this in the script, and now that I was reading it, I was like, shit, oh, okay, I got this upon myself. Like, मैं खुद को ही, okay, I asked for it basically.
So this guy, she's like, he's self-made, he is based out in so and so location, he has a PR. And I was like, that's not how you sell a person to me. You did not tell me his name, you did not tell me his background, what he does, क्या पढ़ाई की है, कहाँ काम कर रहा है. You did not send me a photo, no biodata. You're just telling me that he's self-made and he's here and la la la. I was like, that's not how you do it. So send me the biodata, we'll see. And she was like, give it a shot, give it a try, go meet him. ज़रूरी नहीं है कि तेको जस्ट बिकॉज तेको पसंद नहीं आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको भी ऐसा हो सकता है कि उसको भी ना पसंद आए तू. सो आई वाज लाइक ओके आई एम टेलिंग यू दिस मैरिज थिंग ना, इट जस्ट फक्स मी अप फॉर गुड. लाइक मेंटली आई एम जस्ट सो फकिंग एग्जॉस्टेड एंड लाइक इट्स लाइक गुचुडू, क्या बोलेंगे, there's a straight line and then there is goal line, anxiety wali. That's the anxiety when I think about relationship and marriage. I think relationship is okay, marriage is still far away for me. I don't know about marriage. Marriage happens when you actually find somebody that you vibe with. You have to live with them 24 hours of the day. It is the most important decision you can make for yourself. So we live in the 21st century. I think हम 5 साल पहले भी बॉर्न हुए होते हैं तो सीन अलग ही होता एज़ कम्पेयर टू जो अभी है. बिकॉज अपनी जो बहन भाइयों वाला सीन था ना, जो 1980s में जो बॉर्न हुए थे ना, उनका सीन एकदम अलग था. अब ये 1990s में जो बॉर्न हुआ उनका सीन अलग है. अभी जो लेट 1998 99 2000 में बॉर्न हुए उनका एकदम ही सीन अलग है, विच इज़ बिज़ार. एंड वॉट इज़ इवन मोर बिज़ार इज़ 30-year-old guys, 31, 32, 35-year-old guys are looking for girls who have an age of 23, 24. And I was like, okay, I see that. Okay, got it, got the mindset. Anyways, yeah, that's where we are at. As a crazy challenge to myself, I might throw myself out there and DM, direct message every single Instagram creator who is based out in Mumbai. Big time creator like Viraj Ghelani ho gaya, ya Sahil the comedian ho gaya. Like, just send them out, DM them ki yaar, hey, let's go out for a brunch, let's go out for some coffee, like let me ask you out for a painting class or a art gallery walks, anything fun. Lol, I can do that as an experiment and see what happens. That's so funny. Anyways, so I just saw, as I was browsing through Instagram, I saw that Tira Beauty launched their brand ambassador and it made a buzz. इसीलिए ये पॉडकास्ट पे बात हो भी रही है. करीना, कियारा and a Gen Z face Suhana Khan. Big name in the splash. I mean, makes sense. Nykaa has Shri Devi ki daughter as a brand ambassador for the brand Nykaa. They needed somebody Gen Z, right? So she's beautiful. But damn, I keep forgetting her name. I still don't remember. Every time I look up and then I forget. And then I look up and then I forget her name. I don't know. I just keep calling her Shri Devi ki beti. I'm sorry. Shri Devi was iconic. Rest in peace. But Suhana for Tira Beauty is an solid, powerful, strategic move. With the name and power of Shah Rukh Khan backing her. And uska movie bhi aa raha hai, Archie is coming out in December. It makes sense, having Suhana as a brand ambassador. And I think maybe they have good relations with Ambani. I don't know. Shah Rukh Khan naam outweighs all the stars in the industry itself. Like, that's my personal opinion. My God, we're looking at future, right? She is the future. We're looking at Gen Z, right? But again, I think there was a lot of applause for Kareena as well. Kareena, she looks divine, stunning. Loved her outfit at the event. Brand ambassador, great, awesome. So now,
Tira Beauty is the Indian version of Sephora. Okay. I did accidentally बोलेंगे, I ended up at their store in BKC. I think it was in Geo World Drive. सब एक ही जैसे दिखते हैं, बिल्डिंग नाम भी एक जैसी है, जियो वर्ल्ड गार्डन है, वर्ल्ड ड्राइव है, भगवान जाने, is confusing personally to me. आई थिंक इट वॉज जियो वर्ल्ड ड्राइव, द मॉल, जो मॉल जहाँ पे एप्पल खुला है, एप्पल का स्टोर खुला है, या दैट मॉल इन BKC. Like it wasn't intentional, I wasn't intentional, and nobody knew Tira Beauty क्या है. I just was there, and so I was exploring the entire building, and I accidentally came across the store. We were eating at a restaurant right opposite to that, and then I told my friend Aditi, hey, let's check this store out, because it's a beauty skincare store. I was like, sure, why not? The vibe is great, it's very cooling, calming, chilled out, you know. Real question is, why did they now enter? Like, Indian market is already full with cosmetic skincare e-commerce brand, and when a huge brand like Nykaa already exists, why bring in another brand? Of course they want to make money, make sense, ठीक है. But Nykaa is in everybody's household, मतलब household name हो गया है Nykaa. जैसे अनुपमा सबको पता है कौन है क्या है, it's a show, मतलब when you say अनुपमा you know कौन है. It's the same for Nykaa, it's a household name. And you know, Nykaa has sort of become synonymous with makeup and skincare online. So now Tira Beauty is owned by Reliance Retail, and I did not know this, and now I know it, and that, you know, it makes sense. Now it makes sense when you put कि भाई who owns Tira Beauty? Reliance Retail. Mota Bhai owns, Mr. Mukesh Ambani owns Mumbai. आधे से ज़्यादा मुंबई मिस्टर मुकेश अंबानी का है, एंड द अदर हाफ इज रतन टाटा, ऑफ कोर्स. आई थिंक तीरा विल सर्वाइव इन अ बिगर पिक्चर. आई जेन्यूनली थिंक दैट सेफोरा का तो कोई चांस ही नहीं था, स्टार्टिंग से कोई चांस नहीं था. नायका हैड वेल एस्टैब्लिश्ड, मतलब नायका तब भी आया जब सेफोरा था नहीं इंडिया में, तो सेफोरा सॉर्ट ऑफ बिकेम नायका. इंडिया का नायका वाज सेफोरा, एंड नाउ दे आर ब्रिंगिंग आउट Tira Beauty. I don't know, you know what, I'm honestly excited to see what Tira Beauty has in stores for us. I'm excited to see a new venture come out, and I think Reliance Retail is run under Isha Ambani, so I'm here for it, babies. Like, they're catering toward Gen Z. That's the, I think, target demographic everyone should have, starting and owning a brand, because they are the future. Gen Z it हो गया, Gen Z ही है. Gen Y, Gen X हो चुके, हम मिलेनियल्स हो चुके. They are the future, हम present. Anyways, you know, I can go on and on and on, but ये एपिसोड हो जाएगा 40-50 मिनट का, so I'm gonna stop right here. Yeah, bye.